Hi, Mississauga. I'm Public Education Officer Lori Longman, and it's Fire Prevention Week. This year's theme is Cooking Safety Starts With You. Pay attention to fire prevention. I'm here at Baigs Grill, where we will be making a popular South Indian dish. Let's go see what's cooking. I'm joined by Chef Mohammed. Chef Mohammed, what are we going to be making today? So today we are making a South Indian dish called dosa. You can say like as a savory thin pancake or crepe. Can you tell us a little bit about what the ingredients are for this dish? So I have my let me just start with this first. And this is a batter, and it's a mixture of ground. You can say the fermented lentils, ground lentils and rice, and a little bit of salt in it just to taste. And on the other side, this is a masala. We call it spices. So it's a blend of spices, and this is just an optional, just to put it on the top to give more flavor, basically. So, Before you start cooking, it's important to make sure that you keep all things that can burn away from your stovetop as they can start a fire. तो हम यहाँ पे डोसा बनाने जा रहे हैं और यहाँ पे जो है काफ़ी चीज़ें रखी हुई है, तो मेक श्योर करें कि ये सारी चीज़ें पहले यहाँ से हटा दें ताकि हमको अच्छा सा जगह मिल जाए काम करने के लिए. So this is a dosa batter. As I explained, like it's a mixture of fermented lentils and rice ground. And then the first step is, so make sure to use a long handle so that you can save your hands from burning. So I'll start making dosa first. So So you can make it in any shape, but just to look good, so we are making in circle. So this is all. So we put some oil so that it won't stick to the grill. Okay, so this is my seasoning. So I'm adding some seasoning on top to make it more delicious. Don't worry, you're gonna try this. I'm excited. Looks good already. While cooking, it's important to stay by the stove or look while you cook. Unattended cooking is the leading cause of home fires in Ontario. Yeah. तो जब भी आप पकाना शुरू करेंगे तो मेक श्योर करें कि आप टायर्ड ना हो, आपको नींद ना आए. जब भी आप फ्रेश महसूस करेंगे तभी आप किचन में जाएं, और जब भी आप पकाना शुरू करें तो मेक श्योर करें कि आप वहीं पर हो, क्योंकि जब भी आप अगर कुछ दूसरा काम कर रहे हो और पका भी रहे हो तो उससे या तो फायर हो सकता है या तो कुछ भी डैमेज हो सकता है. तो इट्स बेटर टू बी एट योर कुकिंग स्टेशन rather than doing multiple things together. Okay, so wait. So we're gonna wait it till it gets brown from the bottom. So I'm gonna use one of the flat spoon to take this off. And how would you know that it's ready? So you can see like it will the corners will start getting brown. Yeah. And to add some more flavors, this is a totally optional thing. So you can just add some green coriander. Now, if it's leaving smoothly, it means like it's ready. See? You can retake this one. If you do have a grease fire in a pot or pan on your stove, it's very important that you never put water or flour on it, as it can make it worse. What you want to do is first protect your hands with oven mitts. Then you're going to slide a lid over top of the pot or pan to smother the flames. Turn the heat off. Then you want to exit your home and call 911.
जब भी आप किचन में काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप कोई तेल की चीज़ या कोई ग्रीस का अगर फायर हो गया है, तो आप सबसे पहले ये करेंगे कि डो नॉट पैनिक, और ना उसके ऊपर कोई पानी डालें ना कोई फ्लावर डालें। इंस्टेड आपको करना है कि आपके आसपास कोई लिड होगा तो आप पहले उसको ढाँक दें, लेकिन वो ढाँकने से पहले आप ये ओवन मिट्स हमेशा अपने साथ रखें, जिसको आप पहन के आप लिड ढाँक सकते हैं, जिससे फायर कम हो जाएगी। फिर आप हीट बंद कर दें, बंद करने के बाद आप सीधे बाहर निकल जाएं और आप सीधे 911 कॉल कर सकते हैं। Remember to install working smoke alarms on every story of your home and outside of sleeping areas. It's the law. तो हमेशा याद रखें कि आपके घर में वर्किंग अलार्म होना चाहिए। सारी जगह जहाँ पे आप सोते नहीं हैं, तो जहाँ पर आप सोते हैं उसके बाहर सारे एरिया में और हर फ्लोर पे आपको वर्किंग स्मोक अलार्म लगवाना ज़रूरी है, और एवरी टाइम इसको चेक करना है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। Test your smoke alarms monthly and change the batteries twice a year. Working smoke alarms save lives. तो आपको ये करना है कि आपके स्मोक अलार्म्स को आपको एवरी मंथ चेक करना है, और साल में इसके 2 बार बैटरी चेंज करने हैं, ताकि मेक श्योर रहे कि अलार्म अच्छे से काम कर रहा है। Thank you so much, Chef Mohammed, for having us here today. I Thank you so much. cannot wait to try that dosa. It looks delicious. Yeah, you're very welcome, and thank you so much for coming and giving us a lot of good tips, safety tips, especially for home. And I want to say, everyone, just stay safe and stay safe, everyone. And assalamu alaikum. Walaikum salam.